Oh my God. Chalo. I hope now everybody has joined. Ma'am, can you wait for a minute? Yes, yes. Today is, what is the date today? Class, what is the date today? Ma'am, Ma'am, 28th 28th. December. 2020. Okay, 28th December. Right. Very good. So how many days for the new year to come? 3. Ma'am, 4 more. 3 days. Huh? Ma'am, 3 days. 2 days. 3 days. Very good. 3 days for the new year. So hope you all are excited about new year. Yes, ma'am. Ma'am, very Yes, much. ma'am. Okay. Let us start with the attendance and then we start with the chapter. Ahana, Ma'am, Ahana, Present, Aradhya, ma'am. Aradhya, Present, ma'am. Arush, Abhishri is not there. Then Akshita Dev, not there. Anshika Gangwar, not there. Anshika Yadav, Anshika Yadav is there? No. Anvesha is also not there. Arshit is also not there. Aryan Gangwar has joined. Present, ma'am. Yes, beta. Good morning. Then we have Atharv Verma, Avantika. Present, ma'am. Yes, Avantika is there. Present, ma'am. Fine. Bhavya is there? No. Gurleen, no. Harshit Obroy? Harshit Oberoi present. Yes, yes, yes. Fine. Then Ishi is also there. Present, ma'am. Jay Kanojia, are you there, beta? Jivyansh? Present, ma'am. Okay. Kartike? Khyati? Ma'am. Khyati is there? Yes, ma'am. Present. Okay, beta. Then Mihika? Present, ma'am. Parush? Yes, Parush is also there. Pratyush? Taurus is present. Yes, beta, yes. Pratyush? Present, ma'am. Purvi is not there. Ma'am, Pratyush present. Yes, beta, I have marked. Then Saksham has joined? No. Shagun is there. Shambhavi is not there. Shivansh is there. Shashank Navodit, are you there? No, Shashank is also not there. Shivansh Pal is there. Shrey is not there. Shreya is there. Yes, ma'am. Present. Okay. Utkarsh, Taran. yes, ma'am. Utkarsh present. Then Vishesh is also there. Vyom Ma'am, Saxena. Vishesh present. Yes, Vyom Saxena. Vyom Saxena present. Vyom Okay. Saxena present. Yes, beta, I have marked. And Yashika. Right? And I think Anshika Yadav has also joined us. Right. So there are 21 participants. Okay. Fine. Government has ordered that not to open the school till 31st of Jan. Acha, Ma'am. government ordered this? I don't know. Ma'am, have you marked me present? No, just now you have joined, I believe. No, ma'am, I am not joined just now. Ma'am, Okay. you said I my can- name, but I didn't. Reply. Okay, fine, fine, fine. No, So ma'am, I was not audible. I have Huh. changed that headphones just now, so Okay, fine, I'm fine. audible. Okay, fine. So I have marked you present. Then who else has joined just now? Akshita Dev. Ma'am, Anshika Yadav. Okay. Anshika Yadav, I have marked you present. Then
Akshita Dev has also joined. Okay, children, one important thing I wanted to share with you. Your teachers, other subject teachers must have told you about the art integrated program. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Fine. So for history, like they must have shared with you that you have got certain states, right? Yes, ma'am. Maharashtra. Yes, ma'am. Acha, so ma'am has told you about Maharashtra, no? Ma'am, for next project we have got Maharashtra. Okay. Now what you have to do is you have to let me tell you just a second, huh? What exactly you need to do. Ma'am, Swami Dayanand is only Dayanand Saraswati. Yes, yes, yes. Swami Dayanand Saraswati is called. Who is this Charu Sharma? I think Saksham. Yes, ma'am. Okay, fine. So admitted. Yes, ma'am. Okay. Fine. Beta, let us finish this chapter and then I will share, I'll share what exactly you need to do for your project. Right, class? Yes, ma'am. Okay, fine. So, Vishesh, Yes, ma'am. if you could read Women's Reformers. Yes, ma'am. Hmm. Women reformers. Towards the end of the 19th century, several women reformers had also emerged on the scene. Pandita Ramabai was one such pioneer in the field of women's reformer. She was educated in sacred Sanskrit texts by her father and had become a widow at a young age. Her experience as a widow led her to work for the welfare of widows. Ramabai began her school work with Social work. Arya Mahila Samaj in Pune, Began her social work social with work. Huh. social work with Arya Mahila Samaj in Pune. Later, she established the Sharda Sadan, a school for Indian widows in Bombay. Ramabai's greatest contribution was her effort to educate the widows, and she left behind her pupil to carry her people to carry her work forward. Sarojini Naidu was another well-known social reformer. She fought for women's rights and was associated with All India Women's Conference in 1927. The movement for liberation of women also got stimulus for the rise of nationalism in the 20th century. Their participation in agitation against the partition of Bengal, the Home Rule movement, the Swadeshi movement, and the movement led by Gandhi like non-cooperation and civil disobedience contributed to their liberation. Many of them became good leaders as well. Women also started realizing the necessity to organize themselves. They started many organizations and institutions of their own. The efforts of all these social reformers of the 19th and the 20th century stemmed from the fact that they had realized the importance of progressive society through their knowledge of Western ideas and Asian learning. Fine. See, whenever a person goes through something or experiences, a person's experience only lead that person to betterment, right? So all the social reformers that we have read about,
all these social reformers, they were the ones who had, sometime in their life they had experienced a certain, they had certain bitter experiences about life, So keeping in mind their bitter experiences, they tried to, bring light, they tried to bring, good experiences for the others. So all these social reformers, because they had suffered, discrimination, humiliation somewhere in their life, or some of them, those who did not experience humiliation or, discrimination, but they had such experiences in their personal lives that they had to think about, betterment of others. So keeping all these things in mind, what, like, what exactly, why we are reading this social reformers thing, because the historians, what they have written about about these people, they just want us to, learn from their life experiences, that whatever changes we as, citizens of the country are experiencing, it is all because of the efforts of, certain people, their hard work, their, bitter experiences that led to betterment in the society. Right, class? Yes, ma'am. Fine. Yes, beta. Yes. Yes. I want to ask one thing. Yes, Vyo. Ma'am, instead of making them educated after being a widow, ma'am, they can also she can also do that first. Complete first means ma'am, first completing all the education, then means तब शादी करें जाके. बेटा शादी ऐसा होता था ना कि उस टाइम में हमारी हमारी सोसाइटी इतनी ऑर्थोडॉक्स थी कि कोई अगर ये कह देता था ना कि मैं शादी They करूंगी was दोबारा, gotten disconnected. नो प्रॉब्लम, नो, इट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. तो उसको, उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते थे. जैसे एक मूवी हमने देखी थी, हम जब स्कूल में थे, तो उसमें दे हैड लाइक, मुझे, हाँ, ठीक है, उस मूवी में ये दिखाया गया था कि एक लड़की होती है, शी बिकम्स, विडो एट अ वेरी अर्ली एज. उसकी शादी होती है, विडो हो जाती है वो. तो बिकॉज शी वॉज अ वेरी चुलबुली टाइप ऑफ पर्सन, वेरी लाइवली पर्सन, पूरे घर में घूमते रहना, सबको हंसाना, सबको मतलब मनाना, सबका ध्यान रखना. तो शी वॉज दैट काइंड ऑफ लेडी. जब शादी हो गई, शादी होने के बाद वॉट एवर एक्सपीरियंसेस शी हैड, विद हर इन लॉज, हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ होने के बाद वॉट एवर, शी हैड गॉन थ्रू. अच्छा, बिकॉज शी वॉज ऑफ टेंडर एज, मतलब उसकी एज छोटी थी, तो उसको उसके घर वापस भेज दिया गया. अब जब घर वापस भेज दिया गया, तो वहां पे जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे उसके जो घर के बड़े लोग थे, बिकॉज उस टाइम सोसाइटी में ये सब चलता ही था, तो उसको ये कहा गया कि भाई आप जो है एक विडो की तरह जिएंगी, आप कलर्ड कपड़े नहीं पहनेंगी, आपको अपने बाल शेव ऑफ करने पड़ेंगे. शी हैड गुड लेंथ ऑफ, हेयर. तो जब उसको ये कहा जाता है ना कि अब आपकी लाइफ पहले की जैसी नहीं रही, उसको समझाया जाता है. जो घर के बड़े लेडीज होती है, वो समझाती है कि बेटा, जो भी तुम्हारे साथ, तुम शादी से पहले जो तुम्हारी लाइफ थी, नाउ इट इज अ टोटली डिफरेंट लाइफ. पहले जो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना, मतलब शी वॉज फॉन्ड ऑफ, बैंगल्स एंड ऑल, तो वो बोली कि अब तुम चूड़ियां नहीं पहन सकती हो रंग बिरंगी, अब तुम रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती हो, तुम अपने बाल जो है नहीं संवार सकती हो, तुम शीशा नहीं देख सकती हो, तुम अपने आप को सजा नहीं सकती हो. तो ये सब चीजें वर प्रिवलेंट इन दिस सोसाइटी. वो इसलिए ताकि जो है वो लड़की लड़की एक स्ट्रिक्ट, मतलब एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सके. तो लोगों ने, जो उनके घर के कुछ मेंबर्स तो अग्री हुए इस चीज पे, बट सम ऑफ देम दे सेड कि भाई ऐसा क्यों करना, मतलब ये क्या जरूरी है, क्या इसकी हम दोबारा शादी नहीं करा सकते, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये नॉर्मल अपनी जिंदगी जिए. अगर भाई विडो है, ठीक है, समझ में आ गया, इसका हस्बैंड मर गया है, बोले पर क्या ये अपनी लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी सकती है. जरूरी है इसे एक डार्क रूम में कन्फाइन कर देना, जरूरी है इसको जिंदगी की कोई सुख सुविधा नहीं देना, जरूरी है इसको जो है बेकार, मतलब कपड़े पहन, मतलब सफेद कपड़े पहनना, रंगीन कपड़े नहीं पहनना. तो विद इन फैमिली देयर वर कॉन्ट्रडिक्शंस. बट ये हुआ कि भाई हम समाज से अलग कैसे चल सकते हैं, हम समाज का पार्ट है, वी नीड टू बी पार्ट ऑफ, व्हेन वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी नीड टू मूव along with the society, whatever is are the norms of the society, we need to follow them. तो जो इन चीजों के अगेंस्ट बोल रहा होता है, वो ये कहता है ये समाज में जो नियम है, ये सब हमने ही तो बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए हैं, ये सब हमारे द्वारा बनाए हैं. Ma'am,
हाँ बेटा वेलकम। Ma'am, in Manikarnika movie also it was shown. अच्छा, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी बेटा, तो हो सकता है, तो यही चीजें, तो not. लाइक उस जो भी जो फैमिली मेंबर था उसने बोला कि भाई ये चीज गलत है, आप हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ये सब काम नहीं करेंगे, हम क्यों ऐसा करें, भाई हमारा घर का बच्चा है वो, अगर उसके साथ लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो गई है तो क्यों ना हम उसकी जिंदगी को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, क्यों ना हम उसकी दोबारा शादी कराएं। जब वो ये बोलता है कि दोबारा शादी कराओ, तो एवरीबडी बिकम सो वायलेंट कि भाई हाउ डेयर यू से लाइक दिस, बोले तुम क्या हमें जो है समाज से अलग करोगे, और लोग जो है हमारे पर जो है हमारा मजाक बनाएंगे, हमारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ही वाज लाइक कि ऐसा क्यों, बोले बोले भाई जो भी लाइफ लीड कर रही है, जो डिफिकल्टीज है वो दैट गर्ल इज फेसिंग, बोले पीपल आर नॉट फेसिंग दैट, तो बोले हम, बोले कोई नहीं आएगा जो है इसकी हेल्प करने के लिए किसी भी चीज में, बोले बट इफ शी बिकम्स सेल्फ reliant, and if she is, if she tries to if she tries to bring certain changes in her life, why she is not allowed, why she has to lead a dull life, why can't she practice, why can't she lead a normal life like others. So people become so annoyed with her, with him, that they tell him that you dare you step into our house again. तो ये समाज में चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी की नॉर्म्स में चेंजेस लाने के लिए, यू नीड टू फाइट विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वर देयर। उन्होंने कहा किस मैम आई रिमेम्बर द मूवी नेम। कौन सी है बताओ, नाम बताओ, हमें नाम नहीं पता है बेटा। मैम प्रेम रोग। शायद ऋषि कपूर और पद्मिनी कुलापुरी, नो? यस मैम प्रेम रोग है मैम, मैंने देखी है बहुत बारी। ये तो उसमें फिर उसमें दिखाया कि किस तरीके से जो यंग जनरेशन है वो जो ये जो हमारे घिसे पिटे जो ऑर्थोडॉक्स जो हमारी जो थिंकिंग है उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, और धीरे धीरे दे ट्राई टू चेंज। तो अब जब ये सब, जब ऐसा कुछ उसने आवाज उठाई, तो बाकी लोगों के दिमाग में भी, भाई अगर 15 लोग सुन रहे हैं तो 2-3 लोगों के दिमाग में तो क्लिक करेगा ही ना सेम चीज। तो जब क्लिक करेगी तो भाई सोचेगा भी इंसान, जब सोचेगा तो सर्टेनली चेंजेस विल टेक प्लेस। और ये जितने भी लोगों जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने विडो रिमैरिज के लिए काम करा, दे all whatever they did, it was all because they had experienced somewhere in their life about all these are all bitter experiences बहुत। आप देखो एक छोटी सी चीज, अगर कोई बच्चा अपना सामान लेके नहीं आता है या कोई बच्चा अपना काम करता नहीं है, तो कई बार टीचर्स बहुत डांटते हैं, है ना? बच्चे को लगता है यार काम ही तो नहीं करा, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, पनिश करने की क्या जरूरत थी। बट अगर पनिश नहीं किया जाएगा तो बच्चा कभी सीखेगा नहीं। बट पनिशमेंट देने की भी देयर आर वेज। जो भी बंदा बाहर बेटा निकलते हर्षित, आप दो दो डिवाइसेस से कनेक्ट है? हर्षित, हर्षित, सॉरी मैम। हाँ मैम मैम एकदम मैम कोई connected with the laptop, so my mic was on. ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज का तरीका होता है। आप बच्चा फ्यूचर में अपना होमवर्क अच्छे से करके लाए, याद रखे, उसके लिए देर आर सेवरल वेज। जरूरी थोड़ी है उसको जो है ह्यूमिलेट करा जाए क्लास में, उसके लिए गलत गलत बोला जाए। तो देर आर सर्टेन वेज जिससे कि वी कैन ऑलवेज टीच अ चाइल्ड कि भाई आप क्या करो क्या नहीं करो। ठीक ऐसे ही सोसाइटी में जो भी चेंजेस हमें लाने हैं, वो आप देखो दो तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं, या तो वायलेंट होके या नॉन वायलेंट होके। अगर हम नॉन वायलेंट होके लाने की कोशिश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा लेट होता है, बट होता जरूर है। ठीक है, वायलेंट वे से अगर हम लाने की कोशिश करते हैं तो उस समय के लिए फॉर द टाइमिंग तो चीजें वो वैसी हो जाती हैं, बट अगेन इट गोज बैक टू द सेम प्रैक्टिस। तो इसलिए जो भी हमें काम करना चाहिए वो हमें इस तरीके से करना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ द रिफॉर्म्स एंड अपलिफ्टमेंट। हमें उस तरीके से परस्यू करना चाहिए कि भाई इंसान को समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई होप इट इज ऑल क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, ma'am. फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. Okay, anything Yes, that ma'am. you to explain in women reformers? No, ma'am. Fine. So No, ma'am. let us come to the exercises and question answers. Right? We have done the exercises or not?
No, ma'am. No, Fine. ma'am. I think I gave you sufficient time to do the exercises and question answers, no? Right? Hmm. In one of the classes, I gave you time for that. Yes or no? Tell. Yes, ma'am. Do you need time or shall we start discussing? Ma'am. Ma'am, I have something to ask. Yes, Vishesh, please ask Beta. Ma'am, what was the home rule movement? मुझे पता था विशेष रघुवंशी ये पूछेंगे जरूर बेटा एक्चुअली क्या है जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था तो उस टाइम पे व्हेनेवर अभी जो 13-14 चैप्टर्स हैं वो आपके स्पेशली इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ही हैं किस तरीके से यू नो द लीडर्स ऑफ द कंट्री दे ट्राई टू ब्रिंग फ्रीडम टू द कंट्री तो ये जो आपका होम रूल मूवमेंट है ये एनी बेसेंट ने शुरू करा था ठीक है हम हमें लगता है कि ये सब चीजें हम उस समय अगर आपको बताएं तो आप ज्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे रेदर देन टेलिंग यू इन दिस क्लास इसमें सिर्फ आप ये समझ लो कि बंगाल पार्टीशन जो Okay, ma'am. हाँ बंगाल पार्टीशन होम रूल मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस बहुत सारी चीजें थी जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को इनिशिएट करा हम अपना जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको भी डिवाइडेड इनटू 3 एराज ठीक है तो ये जो एराज हैं इनमें अलग अलग टाइप के लीडर्स आए अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करा बट जो गांधीयन एरा है इट इज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट बिकॉज गांधीयन एरा में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली सरेंडर्ड दे हैड टू लीव द कंट्री तो वी विल बी रीडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स ठीक है बेटा Okay, ma'am. हाँ चलिए दैट्स सो गुड Fine. Now coming to the exercises. Do you need time for looking into the answers or shall we start directly? Ma'am, Yes? 5 minutes. 5 minutes? Okay, fine. So you take 5 minutes, right? And after exact, it is 9:28. So after, at 9:33, I will be asking you the answers, right? All the answers you find till D. A, B, C, D. Okay? Yes, ma'am.
Children done? Ma'am, please wait for a minute. Okay, okay. Yes, ma'am. One question only. Fine, fine. Ma'am, done. Okay, fine. Fine, let us start discussing, huh? Right, first exercise. Ahana? Ahana is done with the exercises? Yes, ma'am. Right, first one. Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj. Very good. Who was the founder of Arya Samaj? Ma'am of Ma'am, Arya Dayanand Saraswati. Dayanand Dayanand Saraswati. Very good. And who was the founder of Arya Mahila Samaj? Ma'am, Pandit Pandita Ramabai. Ramabai. Pandita Ramabai. Pandita Ramabai. Pandita Ramabai. Very good, very good, very good. Then who was behind the establishment of Ramakrishna Mission? Ma'am, Swami Swami Vivekananda. Swami Vivekanand. Very good, very good. And chalo, fine, very good. Next, Avantika. Ma'am, the Kanya Gurukuls were founded by Dayanand Saraswati. Very good. Aradhe. Aradhe, are you there? Yes, ma'am, I'm here, ma'am. Ma'am, I have Yes, tell. really Third one. unmuted, ma'am. It was not dramatic. Ma'am, the British did not interfere in the Indian society and culture before. Ma'am, I don't know, ma'am. I'm guessing 1813. It is 1813 only. Very good. It is 1813 only. Next, Jivyansh. Yes, ma'am. In 1856, who supervised the marriage of an upper caste widow, Vidyasagar? Very good. May I? Vidyasagar supervised the marriage. Next, May I? Parush. Wait. Parush, are you there? Yes, ma'am. Tell. Next, fifth one. Ma'am, they established the Sharda Sadan. Ma'am, Ma'am Vivekanand. No. ma'am, may I? Ma'am, may I? Acha, Ishita. Ma'am, may I? Ma'am, Yes, Pandita Ishi. Ramabai. Ma'am, Pandita Yes. Ramabai. Parush, Pandita Ramabai established. Okay, ma'am. Okay. Chalo. Shreya. Yes, ma'am. Beta, fill in the blanks first. Dash opened the first girls' school in 1874. Ma'am, Veerasalingam. Very good. Next, Yashika. Yashika. Ma'am, may I? Yes, Taran. Ma'am, Sir Syed Ahmad Khan. Very good. Anshika Yadav. Third one. The practice of marrying more than one woman is known as polygamy. Very good. Next is Harshita Oberoi. Fourth one. Ma'am, Yes. wait a minute, ma'am. You okay? Yes, ma'am. Ma'am, I am still finding. So ठीक है. Let Vishesh, do you know this answer? Anybody who knows? Ma'am. Yes, ma'am, ma'am, I know. Ma'am, I know. Ma'am, polygamy. I got it. No. Polygamy. No. Ma'am, बिल्कुल I नहीं. got it. Yes, tell. Ma'am, I know.
Yes, tell. Ma'am, I know. अच्छा Ma'am, I know. विशेष बताओ, विशेष बताओ, विशेष बताओ. Ma'am, rationalism. हाँ, ideals of rationalism, humanism and Yes, ma'am. Ma'am, अभी देखा. very good. Rationalism and humanism, right? Ma'am, Yes, and ma'am. liberalism. Liberalism भी कर सकते हो, ठीक है? Rationalism, humanism and liberalism. Fine? Okay, ma'am. Very good. Very good. Then Shagun, fifth one. Shagun, are you there? May I? Yes. May I? Yes, ma'am, I'm there. हाँ, चलो शगुन बताओ बेटा, फिफ्थ वाला ब्लैंक बताओ बच्चे. Ma'am, this one I'm confused and I'm still finding. ठीक है, अक्षिता आप बताओ बेटा. Ma'am, may I? अक्षिता Sati was Ma'am, Sati was fourth one we have banned to by the British. Sati government. was banned by the British government in the year 1829. Very good, Akshita. Shagun, got it? Yes, ma'am. चलिए कोई नहीं. Ma'am, in the fourth one May we I? have to do only one or ma'am तीनों? all three you write. बेटा all three you write. All three. Okay, ma'am. Ma'am, may I answer next one? ma'am. Yes, May बेटा. I answer? Wait. Ma'am, Avantika, may I? बेटा. Ma'am, I have to ask the the answer for fifth MCQ. It is Pandita Ramabai, option D, बेटा. Okay, ma'am. Thank you. Fine. Answer. Okay, now Ma'am, listen. may I tell? I am calling 5 names, right? Right? Jivyansh, Aradhe, Utkarsh,